People, we want to share our plan for this month, right? This month of November. So we have planned a lot of sessions as well as some exercises for all of you. How we want to conduct it, right? So so that we can follow a schedule. और आज का session I wanted to take it particularly also because we are already late by a day, right? So I did not want to miss this session of today's, right? So I will share this in our group also, but for now I'm just going through it, right? So today was the course walkthrough and tier 2 PYQ and syllabus discussion, right? So this is the calendar that I have made for us so that we can follow it, right? So we are planning a lot of things. I will first go through the content. I have already shared these things in the group earlier also, in the free group, right? As all of you may be aware, but I have added a few things here also, right? So सबसे पहले तो orientation हमारा हो चुका है almost, right? We have set up the expectations. So I did not tell you guys why tier 2 is conducted. A little bit of here and there I told. So tier 2 is conducted to check how better you are with English as well as your perception in English, right? So when you write essay, right, or when you write the long answers, your thoughts will come into the picture, right? How you form arguments, how you form points, how you format the essay, right? So when I was posted in headquarters, we used to write reports, right? That will be your job as an intelligence officers when you will be posted somewhere, right? Or when you will hold some post at some outpost or some place, right? So your job will be to report incidents in a form of written document, right? So you will be writing it, and that will go to your senior officers, right? So senior officers may be some senior ACIO officer, which is called DCIO, right? Or it may also go to some IPS officers, right? So that is why your English is very important, right? And the second thing is formatting is also, that is why, very important, because when you are showing intelligence, when you are giving intelligence, you can't be that extreme like I have already shown, but you need to be truthful, right? So honesty is needed when you write something. You need to support your arguments, because अगर मैं ऐसे बोल दूं, if I write in report कि this thing happened here and without attaching any evidence, will it be believed? No, right? So both of these things is checked in this paper. So make sure that you are working on your English a little bit, reading newspapers, or even if you write our essay practices and comprehension practice, it should be all right, right? No need to worry a lot of things. It is just simple English, nothing else. No fancy words needed, like Shashi Tharoor used to, use or write, right? So no need to do that, right? What does it test? It tests your English, I have already told, and your perception ability, how you frame your sentences, how you write your essay, formatting, right? Those things. Qualities that you need to show, it is time management, because sometimes you will be under pressure to check or synthesize a lot of documents. You will need to file your report within an hour or within half an hour, right? So that is why there is a time limit and all those things, right? So time management is one thing, and under time pressure, if you can deliver or not, right? If you have any questions over that, I don't think any question is needed here, because this is just about the motivation part and why tier 2 is actually conducted, right? This is just a short thing. Now I will go ahead with, I will take Q&A at the end, because we have little time left, right? It was to be a 30-minute, but we only have 10 minutes now, right? So we are planning with newspaper. So we will take 3 sessions where I and Antriksh, I or Antriksh may take up the newspaper of today or newspaper of that day, and we will read it with you, right? With you meaning ki we will go through the newspaper and tell you that, okay, I will read this, I will not read that, right? Antriksh may have his own ideas, right? He may take a different approach, but your job is to learn from both of us. कि अगर मैं, if I am telling something, say XXX, and something ABC, right? And Antriksh is telling XYZ, right? So your job is to make sure that what suits you better, how can you adapt it to it, right? So sometimes you may learn better by using some method, approach 1, and you may learn better by using approach 2, right? So we both have our own experiences, right? And we will try to do best, right? And then there will be editorial sessions. 2 editorial sessions will be there, where we will go through the editorials and show you that how to
assimilate that editorial into your thinking, right? So if that what is the information within that editorial which is beneficial for you, right? Then there will be a daily session. So these newspapers 3 sessions and editorial 2 sessions only. And after that we will have news in 15-minute session, where I will request every one of you to come up with at least one editorial every day, right? And you will explain it to me or Antriksh. We will discuss it together, right? So suppose some editorial is there on say irrigation system, right? So you will come up to us. You will present us, okay, I have read about this editorial, right? You will share that editorial, whatever you are reading. We will discuss it later in the day or whenever we get time, right? It will be done in only in 5 minutes. So we will just have 5 minutes. You will tell us, okay, I have learned this and that, and I will also tell you guys, okay, we have learned this and that, right? Or you can take this thing out from this editorial. How can you use that information in essay or long answer, or for your own ability also, right? And editorial will help you for other exams also, because Antriksh has already pointed that out to me, that editorial sometimes contain information related to current affairs, right? Or many times, right? So that will be useful for your objective type questions, right, when you appear for them, right? Then there will be essay sessions, right, where we will have essay key class, right? So there will be some informal discussion, right, like Rohit has or someone of you. There will be some informal discussion on essay, right, how to write an essay and all those things. We will go through PYQs and other stuff. Then there will be introduction, body, and what to write in the body, right? So all these things will be covered, right? How to conclude the essay, how to think an essay, right? Then there will be a cheat sheet. In cheat sheet we will have some useful things for you to use, right? So that you don't have to go through each and everything, or even if you have noted down or not noted down, we will do that thing, right? So it can be quotes or some news or some data or fact, right? So suppose some climate related question is asked in the exam, right? Because in Delhi AQI is really really bad, so some question is about AQI. So what we will do is that we will write something about AQI in the cheat sheet, so you will have that also, right? In comprehension there will be weekly practices, and some analysis will be there on answer finding. Just give me a minute, I'm getting a call. I'm sorry, just give me a minute. Antriksh, if anyone has any question, Antriksh, can you take it please? Just a minute. हाँ, कोई क्वेश्चन हो किसी को तो पूछो, पूछ लो आप में से कुछ, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो। Okay. Hello. Okay. Ask. सर आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर मेरा वही रिगार्डिंग ऐसे के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, मैंने ग्रुप में भी किया था। जैसे सब लोग ऐसे लिखते हैं, कोई पूरा एक पेज पे पूरा लिख देता है और कोई पॉइंट्स में लिखता है, और मैंने ऐसा आज पूछा था कि ऐसे हमको इंट्रोडक्शन बॉडी करेगा करके मेंशन करना पड़ेगा या हम लोग पैराग्राफ में लिख सकते हैं? नहीं, इंट्रोडक्शन मतलब क्या मेंशन करना पड़ेगा? आवाज नहीं है। मतलब मेरा क्वेश्चन सर यही है कि हमको ऐसे लिखने का फॉर्मेट होता है, इंट्रो, बॉडी, पैराग्राफ एंड कंक्लूजन। हाँ, 3 पॉइंट्स में हम लोग पूरा ऐसे खत्म कर सकते हैं क्या, या फिर हमको अलग से पॉइंट? नहीं, इन 3 पॉइंट्स में खत्म करना है। और जो बुलेट पॉइंट्स जो है, देखो अभी अपने ग्रुप में क्या है, नॉर्मली ऐसे लिख रहे हैं, हम अभी स्टार्टिंग है ना सबकी, तो इसलिए बुलेट पॉइंट्स वैसे गलत होता है। लेकिन हमने अभी 1-2 ऐसे सब लोग लिख रहे हैं, अलाउ कर रखा है, लेकिन बुलेट पॉइंट वैसे गलत होता है। वो बुलेट पॉइंट कोशिश करो जितना हो सके नहीं डालो। इसलिए मैंने जब मैंने ना वो बोला था, क्या बोलते हैं, मैंने ये बोला था कि जब भी कोई आप ऐसे लिखना चालू करो, तो अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है तो क्या करना था, इंटरनेट पे आपको उसके बारे में सर्च करना है, और जो इंटरनेट पे सर्च करके उनको रफ पेज में पॉइंट्स में लिखना है। मैंने ये बताया था उनको, उन पॉइंट्स को फिर आपको कैसे पैराग्राफ में चेंज करना है, वो उन पॉइंट्स को साइड में रख दो, फिर उसको पैराग्राफ में चेंज करके लिखो। मैंने यही बताया था ना स्टार्टिंग में जब लिखने के लिए बोला था। तो लिखना आपको जो आपने जो बताया बॉडी और इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो वैसे ही रहना चाहिए। और आप उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इसमें, तो आप
किसी भी मतलब की बुक से हेल्प ले सकते हो कि उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के देन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो ऐसे में। एक टाइम ऐसा आता है ना, लिखते लिखते बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब पॉइंट ही नहीं आता है कि क्या लिखे। हाँ ठीक है, अब मेरा वो तो एडिटोरियल देखो स्टार्टिंग में देखो अभी स्टार्टिंग में ये आएगी प्रॉब्लम, वो इसलिए मेरा तो आएगी सर क्योंकि इशू अपन को ये है किसी कि किसी टॉपिक में नॉलेज नहीं होती है। जैसे मैं खुद का ही बताता हूँ, मैंने जब पहली बार ये एडवर्टाइजमेंट वाला लिखा था तो मुझे पता है 1-1.5 घंटे से ज्यादा लगा था, और मैं 3 साल पहले लिखा था ये। मेरा तो इशू ये है कि मैं 15 साल बिल्कुल पढ़ाई से दूर ही रहा हूँ सर। अभी दोबारा हम्म, फिर से रिस्टार्ट ले रहा हूँ। हम्म, तो मतलब एक टाइम पे ऐसा था बिल्कुल समझ में मैं करूँ क्या। हाँ कोई ना, ठीक है, टाइम आप लगेगा, बेटर हो जाएगा। बेटर ठीक है, तो शैल आई कंटिन्यू हाँ हाँ सर। ठीक है, ओके। तो मैं कॉम्प्रहेंशन पे था कि कॉम्प्रहेंशन की हम लोग वीकली प्रैक्टिस करेंगे, तो देयर विल बी वीकली प्रैक्टिस सेट्स एंड हम लोग वीकली फीडबैक भी देंगे हर वीकेंड पे। वी विल गिव अ ऑन सैटरडेज वी आर प्लानिंग टू गिव सम कॉम्प्रहेंशन पैसेज, फिर आप उसका आंसर लिख के उसी दिन या फिर उसी शेयर करोगे एंड टिल एंड ऑफ द डे संडे वी विल गिव यू फीडबैक, राइट। लॉन्ग आंसर्स पे भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मतलब प्लान कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग राइटिंग आंसर्स का मेथड रखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। वीकली प्रैक्टिस होगी लॉन्ग आंसर्स की, राइट। जैसे कि हम लोग सेशन में फ्री वाले में ऑलरेडी डाल रहे हैं, राइट। तो उसके एडिशन में भी इफ़ वी रियलाइज कि हमें और कुछ भी देना चाहिए तो वी विल गिव दैट। अदरवाइज वी विल हैव अ हैंड बुक, राइट, जहाँ पे हम लोग कुछ करंट अफेयर टॉपिक या कुछ नेसेसरी टॉपिक्स जैसा कि उसमें दिया गया है कोर्स, सॉरी नोटिफिकेशन में दिया गया है, we will try to see कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड on the top 30 or top 40 topics we will have 10 points each for each of the topic, so that you can study it for your reference. Suppose ki there will still be time in your in your exams, right? So then in that case it will help. Otherwise the notes that you are making are the best source of knowledge. The essays that you are writing, the long answers that you are writing, I will say you know preserve it, as for as long as you can, right? क्योंकि जो खुद से लिखा देखने से जो मेमोरी में छपता है ना, मतलब आई कांट टेल यू कि हाउ मच इट हेल्प्स, राइट। So that sticks very well mentally, but we will give you this just for in case we miss some topics, and it will be covered in the handbook, right? So then there will be full length mock test, right? So 4 mock tests we are planning, right? It will be back end of the course. One of the mock tests we are planning it ki after tier 1 results announcement after 1 or 2 days, because one of the mock tests will be free for everyone, as I promised when I started this batch, or when I started the group, right? Our initiative. So one of the first of the full length mock tests will be free of cost, which will be available for everyone, right? And then personal one-on-one session, because we are only 5 or 6 people. I think we may increase a little bit, but given that we can afford to have one-on-one sessions for all of these mock tests. So you give the mock test, you can have a call with us, we will chat about it, that what went wrong and what went right, how can we improve on that, right? And it is really good to see that people are willing to write the answers and willing to write the essays as well, right? So it will help all of you. Editorial discussion Saturdays and Sundays, but that will be covered under this only, right? The thing that I said in the newspaper, that news in 15 minutes, right? that will that will be a practice for you guys, right? You guys will have to work on this. I'm just asking for one editorial every day, not all, right? You just read one editorial, right? अंतरिक्ष ने पहले भी बोला था कि यू कैन गो थ्रू योर फेवरेट सेक्शन. सो माय फेवरेट सेक्शन इज स्पोर्ट्स और दी फाइनेंशियल न्यूज, कि सेंसेक्स में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट, यू आर इंटरेस्टेड, राइट? आई होप गौरव विल बी इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज ही विल नो अबाउट इट, राइट? So all these things, right, you can go through कि क्या चल रहा है आजकल, या फिर and then you go through one of the editorials. You just read the headings and check out which one attracts you more, right? And then read about that. फिर हमारे साथ में आप डिस्कस करो आके कि let's discuss this. I have read this editorial. We will also read it, form our own opinion, then we will discuss about it with everyone present, right? It will not be a one-on-one discussion. It will be like कि everyone will be present. So सबके आइडियाज वहाँ पे आएंगे, right? So we are trying to do something समुद्र मंथन ऑफ सॉर्ट, राइट, जहाँ पे हम लोग कुछ और अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू through discussion, right? So all other things are already covered. This course plan is there for all of you to read. All of the content that I already shared is here only, right?
तो ये कैलेंडर में वो सारा कुछ है जो मैंने अभी बताया आपको कि हम क्या क्या कवर करना चाहते हैं। यू कैन सी कि जैसे वीकेंड में मैंने बोला कि कॉम्प्रहेंशन प्रैक्टिस होगी, फीडबैक होगा और एडिटोरियल का डिस्कशन होंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे न्यूज इन 15 मिनट्स होगा, राइट। सो ऑल ऑफ दिस वी हैव ऑलरेडी प्लान, राइट। सो और एनी एक 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 एडिशन और है कि हम लोग आपको एक नेशनल और एक इंटरनेशनल न्यूज भी दिया करेंगे एज पॉसिबल, जिस मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लाइक ऐसे के लिए और लॉन्ग आंसर के लिए, उससे बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, तो वी विल प्रोवाइड दिस। वो आप नोट डाउन कर सकते हो कि वो उसको ऐसे में आप यूज कर सकते हो लेटर ऑनवर्ड्स, राइट। या हम लोग कोई जैसे कोट हम लोग एक दिन हमने शेयर कर दिया, कोई रिपोर्ट हुई जैसे कि प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आती है एक, राइट, दैट इज देयर। या AQI, व्हाट इज व्हाट इज द एवरेज AQI ऑफ दिल्ली, या फिर मतलब देयर आर मल्टीपल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच विल स्टिक टू योर माइंड एंड यू कैन यूज इट इन योर एसे। लॉन्ग आंसर में भी यूज कर सकते हैं, बट लॉन्ग आंसर का स्कोप थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो वी विल यूज दैट अकॉर्डिंगली। तो आप नोट डाउन रोज करते रहो, बट आई विल अगेन इनकरेज कि आप न्यूज़पेपर खुद से पढ़ो और आप खुद से लिखो, एक इंटरनेशनल न्यूज़, एक नेशनल न्यूज़। सो व्हेन आई यूज टू प्रिपेयर फॉर माय SSB इंटरव्यूज ना, देन आई यूज टू, मैं रोज लिखता था अपना एक नेशनल, एक नहीं एक्चुअली मैं 2-3 लिखता था कि 2-3, 3 नेशनल न्यूज़, 3 इंटरनेशनल न्यूज़। एंड हमारा एक ग्रुप था, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे जो भी न्यूज़ होती थी। वी स्टिल हैव अ ग्रुप जहाँ पे हम लोग, जो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं वो करते थे। तो यू गाइज विल रियली लाइक दिस। और ये जो डिस्कस करने में आप जो मैं कह रहा हूँ न्यूज इन 15 मिनट्स ना, ये हो सकता है 30 मिनट्स का हो जाए, बट यू गाइज विल मतलब गेन अ लॉट ऑफ फ्रॉम दिस। आप लिखते हो जो वही जो आप जो सोचते हो वही लिखते हो, राइट। डेवलप हो जाए तो यू विल ऑटोमेटिकली राइट गुड एसे, यू विल ऑटोमेटिकली राइट गुड थिंग्स इन योर लॉन्ग आंसर ऑल्सो। तो प्रैक्टिस मतलब मोटिव यही है कि हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन कर लें उसके अकॉर्डिंग जो हमें लिखना है, राइट। सो ये हमारा प्लान है। वी विल शेयर दिस इन आवर ग्रुप, राइट। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। एक चीज़ और शेयर करनी थी यहाँ पे, मतलब जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन है इनका, राइट। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि AC 20 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 10 मार्क्स, राइट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ऑल दीज थिंग्स दे हैव गिवन ऑलरेडी हियर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन व्हाट, ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड सोशियो पॉलिटिकल इशूज, ETC, राइट। नाउ आई बिलीव कि जो IB फॉलो करता है वो UPSC फॉर्मेट पे ये लोग पूरी तरह से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऑनेस्टली। तो करंट अफेयर्स वी विल कवर इन अवर हैंडबुक, और जो हम लोग एसेस दे रहे हैं, करंट अफेयर इज नथिंग बट मैनिफेस्टेशन ऑफ दी टॉपिक्स, राइट। तो अगर क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज आपने पढ़ा हुआ है तो करंट अफेयर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा डजेंट मैटर। और करंट अफेयर में मैंने, अगर आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा हुआ है तो क्लाइमेट चेंज आपने एज एन ओरिजिनल पढ़ा हुआ डजेंट मैटर। तो आपको बस कहीं से पढ़ना है, आप चाहे वो करंट अफेयर में कवर करो या इकोनॉमिक्स में कवर करो या सोशियो पॉलिटिकल में कवर करो। सोशियो पॉलिटिकल, व्हाट इज सोशियो पॉलिटिकल, जो सोसाइटी को या वर्ल्ड को मतलब एज अ सोसाइटी हार्म कर रहा है, लाइक, राइट। सो इसमें वो भी हो सकता है कि राइट्स भी आ सकता है कि मतलब राइट लाइक सिचुएशन होती है तो आप क्या करोगे, या फिर सम डिजास्टर मैनेजमेंट में ऑल्सो भी देयर, राइट। क्योंकि अभी तूफान आया है वहां पे, तो व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर। तो जस्ट टू शो यू कि नोटिफिकेशन में क्या है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ा हो तो इन दैट केस, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू टुडे। तो ये आज का तो हो गया ये, राइट। Tier 2 PYQ वी विल कीप इट फॉर आवर पार्टिकुलर सेशन। सो व्हेन वी विल डिस्कस दिस ऐसे ना, then we will discuss PYQs and how to write those intros, right? So this is essay 101, right? This is essay 102. तो essay 102 में introduction है, तो we will tell you कि ये PYQ आया था, so how do will you write introduction for that one, या फिर we will give some examples. So PYQs we will cover differently here, right? क्योंकि एक बार में PYQ cover करना और we may try to schedule some class. I and Antriksh and Om will discuss this, how to take that one forward. फिर उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो बस इतना ही था आज का हेलो सेशन। सर।